अब से कुछ ही देर बाद चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों की तिथियों की हो सकती है घोषणा। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर को लेकर वाराणसी जिला अदालत का बड़ा फैसला। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की खारिज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और रेलवे मंत्रालयों की विभिन्न परियोजनाओं का किया शुभारंभ। परियोजनाओं में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कई मॉडल शामिल। पूर्वोत्तर दौरे के तीसरे दिन गुवाहाटी में मां कामाख्या के किए दर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक परिसर में एक वेबसाइट मां भारती के सपूत करेंगे लॉन्च। वेबसाइट के जरिए नागरिक सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष में कर सकेंगे योगदान। वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवारों को भी मिलेगी मदद। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाला मामले में ईडी फिर एक्शन में। दिल्ली में 25 ठिकानों में सर्च ऑपरेशन। दिल्ली के कई बड़े शराब कारोबारियों के आवास और अन्य ठिकानों पर चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। पटना के एक बड़े बिल्डर और होटल कारोबारी के कुल 31 ठिकानों पर आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। जानकारी के मुताबिक छापेमारी का दायरा पटना के कई स्थानों के अलावा नोएडा और झारखंड तक। गुप्त सूचना के आधार पर मारे जा रहे हैं छापे। फिलहाल आपको हम सीधे लिए चल रहे हैं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। My esteemed colleague, Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandey ji, senior officials from the Election Commission on the dais, and friends from media who have gathered here today, and also those who are connected with us virtually. We meet today for a press conference that most of you have been awaiting and have also been guessing since morning also. October is a month with many festivals, and we are adding one more festival, that is the festival of democracy, to this month of October. अक्टूबर के इस त्योहार के माहौल में लोकतंत्र के त्योहार को भी हम लोग जोड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें 18 साल से लेकर 100 वर्ष तक के बुजुर्ग मतदाताओं का एक बहुत ही बहुरंगी इंद्रधनुष है। It's a fantastic rainbow of the voters ranging from 18 years to 100 plus, and we'll focus a bit on this rainbow. I would explain in the detail about this, but in the meantime, to move forward, the elections, when we conduct, we have three broad objectives. First is the elections have to be free, fair, inclusive, accessible, and inducement free. And the second major vertical is the voter, that the voting experience should be very, very comfortable. And thirdly, the maximum voter participation, especially of the young voters, urban voters, PWDs, and senior citizens. These four categories we intend to focus more, which I'll explain. भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष, प्रलोभन मुक्त, इंड्यूसमेंट फ्री तरीके से विधानसभा का आगामी निर्वाचन चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है, और हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सबकी भागीदारी बहुत ही सशक्त तरीके से आने वाले चुनावों में हो। Through the vast reach of the media, I would request first that interaction will start with the wish that our appeal is being heard by most of the voters, and they will come out to participate wholeheartedly in this forthcoming festival of democracy. Before going into the mode of the elections, we have an extensive process of consultation. And the magnitude and scale of our elections is really awe-inspiring, as you all know. For the last few months, our entire team, which you are seeing here, has been working on organizing these elections, ranging from
the electoral rolls to the management of logistics to various things which we will explain. Periodic reviews were done by them. The commission also went to the states where the elections are due, and we had detailed meetings with the DOs, with the SPs, and with all the enforcement agencies, chief secretaries, DGs, and everyone who is involved in either conduct of elections or in the enforcement side of this. We also simultaneously discussed the COVID situation, as it has been bothering in the last 2 rounds of elections. We had a detailed discussion with the Health Secretary, Union Health Secretary, and also with the Chief Secretaries and DGs of the concerned states, Health Secretaries. It doesn't seem to be that much of a concern now, but still, the states have been advised that they will continue to follow the 5-fold strategy of test, track, treat, vaccinate, and follow the appropriate behavior. We have revised our guidelines, which are in this form, essentially saying that they have to follow the norms set by the Health Ministry and also the respective SDMAs in the states if there is any situation that warrants the tightening or the graded response to the COVID situation. Friends, the first and foremost thing in conducting an election is the electoral roll. A healthy, error-free electoral roll is the primary step, that is the base on which the entire elections are held. And the special summary revision has just happened. The electoral rolls have been published in the concerned states. And during this exercise, the Commission has laid a special emphasis on registration of new age voters, women, transgenders, and persons with disabilities. In order to ensure a clean electoral roll, the photographically similar entries, PSCs, and demographically similar entries have been found through the use of software and field verification. They were circulated to all the DOs and also to the respective BLOs to do a field verification of those who are found to be in the demographically similar entries or the photo similar entries. The special proactive steps were taken for the registration of PWDs, old age, and also the third gender. In this, we took help of the welfare departments, respective departments. For example, the welfare department, whenever the question of the registration of PWDs came. So whomsoever they were giving scholarship, we just cross-checked that they are our voters. To address the issue of urban apathy, we found that there is generally an urban apathy. If I can give you an example, in the 2019 elections, general elections, and if we list all the, say, 7-8 districts where the voting has been least, 4 of them happen to be the metropolitan cities. It's all in our statistics book, which we have published. I am not naming them here, but we are focusing on the urban apathy very, very seriously. In this, our CEOs are signing the MOUs with the departments and with the industry and with the organizations who have more than 500 persons. And we have reached out to the colleges and the educational institutions. What is expected is that after the voting, if the nodal officers are appointed in these organizations with 500 plus voters, and we will try and persuade those voters after the elections, the leave-taking and non-voting voters, we will try and reach to them and say, please join next time. So that's a kind of a awareness which we will start. The Election Commission of India, in pursuance of the legal amendments, had made 4 dates, as you are all aware. And this, by virtue of this, there is every quarter, first of the every quarter, one can apply for the registration. And the new, now onwards, the electoral rolls will be updated every quarter. और निर्वाचन आयोग की इस पहल पर कानून में जो बदलाव किए गए,
जिसके कारण 4 डेट्स में संभव है। और अब पोल गोइंग स्टेट्स में नामांकन के दिन तक भी अभी मतदाता में सूची में नाम जुड़वाया जा सकता है। तो इसमें यह भी आपके माध्यम से अनुरोध है कि अगर इतनी मेहनत करके नए वोटर्स को जोड़ने के लिए कमीशन ने और फील्ड स्टाफ ने मेहनत की है, तो उनको भी आगे बढ़ के वोट देने आना चाहिए। Friends, I'll also tell you how many specifically benefited by this amendment. I'll come to it and tell you. In an election, voters are our primary stakeholders, and therefore, even those who do not have a voter epic, by and large, we have now ensured that the voting epic card reaches everyone. It's being delivered even now, but by chance, if you don't have, there are these many, almost a dozen other documents through which one can vote. So one need not be worried. What is important is to come to the booth with any one of these, even if one doesn't have an epic. Now the next important thing is the polling station. And that's the next point at which we interact with the voter. The effort is to make the voting experience, it's quite protocol based, but we are still trying that the experience becomes far more enjoyable in the true spirit of the festival of the democracy. Our COs and DOs have been asked to identify the lowest polling percentage booth in each constituency. This is what we are doing to increase our awareness and persuade the voters to come and vote. And they are going personally to the polling stations which are having the least percentage of voting below the average in their each respective constituencies. So they'll try and find out what is the issue, why there is a lesser percentage of voting in those particular booths. They'll try and bring them up to the level of the general voting in that particular constituency. Friends, कमीशन का एक दूसरा फोकस है जो हमेशा रहा है, उसमें आगे हर बार नई चीज जुड़ती है, वो ये है कि हर पोलिंग स्टेशन पर कुछ बेसिक सुविधाएं निश्चित रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए। तो ये जितनी बेसिक सुविधाएं हम आपको स्लाइड के माध्यम से भी दिखा रहे हैं, एवरी पोलिंग स्टेशन वुड हैव ए रैंप which is accessible for the PWDs, drinking water, electricity, shade, and volunteers for the PWDs for the old age. Every polling station would be on a ground floor so that it is not problematic for anybody to climb. तो जितना भी कंफर्ट पोलिंग स्टेशन पे दे सकते हैं वो देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और इन इलेक्शंस में 100% सर्टिफिकेट डीओ से लिया जा रहा है कि सब पोलिंग स्टेशंस पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। फ्रेंड्स, कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जिसमें जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही मैनेज्ड होंगे, ऑल पोलिंग पर्सनल एंड ऑल्सो इवन द सिक्योरिटी स्टाफ 100% women oriented. So this is every assembly would have at least one and more in certain pockets. So महिलाओं के सशक्तिकरण को दर्शाने का चुनावों के इस माध्यम से भी हम लोग एक बहुत सशक्त माध्यम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक्सपीरियंस भी एक बहुत अच्छा हो और साथ साथ एक सशक्तिकरण को भी वो प्रदर्शित कर सके। फ्रेंड्स, सिमिलरली some polling stations will be managed entirely by our PWD staff, or they will be ready to welcome the voters. And आपके माध्यम से ये भी हम लोग कहना चाहते हैं, और कमीशन में बहुत ही इसके बारे में सेंसिटिविटी है, कि जो PWDs हैं वो एक्चुअली बहुत मायने में हमसे बहुत ज्यादा एबल्ड हैं। उनका चिंतन, उनका भाव, उनके इमोशंस, उनकी सहनशीलता, बहुत चीज हम लोगों से ज्यादा है। सो व्हाट दे रिक्वायर इज एसेंशियली द इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, नॉट mere sympathy. And therefore we are very, very conscious that we will cover all the PWDs, mark them. I'll give you a figure as to how much we have marked all India, and you would be happy to know that. I'll come to that slowly. Now maybe at the cost of repeating,
I would reiterate, if we as the Election Commission team put in such concerted efforts to ensure a polling station within 2-kilometer reach for voters, replete with all kinds of facilities, I would appeal to the voters to value their hard-earned right to franchise and come out to vote in maximum numbers so that Matdata Rupi Indradhanush har booth par dikhai de. Now I come to, friends, the postal ballot facility for the absentee voters, because it would be happening first time in these elections. Commission has decided and introduced this in the last round of elections that 80 plus age voters, PWDs and COVID infected voters, we would provide a form 12D, and if they are willing, if they want to come to the polling station, every effort would be made to make it very, very comfortable there, and we encourage it. But in case somebody is ill and is not able to come, the commission would go to their house and get the vote conducted. And जैसे पिछली बार एक दो जगह में ये सूचना मिली थी कि कुछ शिकायत मिलने की उम्मीद थी कि आपने वोटर्स का उनका कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है घर पर, उसको खत्म करने के लिए भी एवरी एंटायर प्रोसेस वुड बी वीडियोग्राफ्ड. साथ में कैंडिडेट्स के एजेंट्स को पहले से ही सूचित किया जाएगा कि किस दिन वोट लेने जाएंगे, वो साथ में जाएंगे, जा सकते हैं, एंड एवरीथिंग वुड बी वीडियोग्राफ्ड. So, without compromising the secrecy of vote, the facility of voting would be extended right from the comfort of their home. And you would be happy to know, in the entire country, there are 1.82 crores voters who are 80 plus. And you would further be happy to know there are 100 plus voters, centenarians, who are crossing 2.5 lakhs. Imagine that they are all part of our voter list. And we are so happy, so privileged to serve them better. Actually, किसी भी सोसाइटी में अगर हम एल्डर्स की देखभाल नहीं करते, उनको सम्मान नहीं दे सकते, तो it's not a right way of our human behavior. तो हम लोग इसके बारे में बहुत सजग हैं और वोट की सीक्रेसी को पूर्णतः अक्षुण्ण रखते हुए उनके घर से वोट भी लेंगे अगर उन्हें इस बात की जरूरत होगी. Similarly, for PWDs, all the facilities starting from a volunteer to the wheelchair, if they require, would all be available at the booths. And again, to give you another interesting figure, there are 82 lakhs PWDs also who are marked in our voter list. And our entire effort is to make it inclusive and accessible. The Commission puts a whole lot of emphasis on making the elections truly participative, accessible for all our PWD brothers and sisters. Friends, I would just briefly touch the technological interventions. There is a whole lot of technology which will go into the elections, starting from for the ease of the voters and also for managing the inducement-free elections. Firstly, the voter helpline, you can see all kinds of informations in that, including your booth location, including the candidates, the informations about them and results. The another interesting and very important application is a C-Vigil application. What it does, any voter can make any complaint, and the moment he either he can take a picture from his mobile, he can write on a paper and take a photo, or he can type. And the moment he sends a message to C-Vigil, his longitude and latitude is automatically fed. Means his location, geolocation is known. And our team will reach within 60 minutes flat and would answer in 90 minutes. So what we are saying, what we are appealing through you to our voters, कि अगर कहीं भी कोई भी दुरुपयोग मनी पावर का, नारकोटिक्स का, ड्रग्स का, किसी भी तरीके का उनको नजर आता है, किसी भी पोलिंग पार्टी का कोई चीज गलत नजर आती है, तो कृपया उसको C-Vigil पे डालें. कुछ स्टेट्स ने बहुत इफेक्टिवली, सशक्त तरीके से इसको यूज किया, एंड दिस इज बिकमिंग एन इंटरेस्टिंग टूल इन आवर हैंड्स टू कंट्रोल
the menace of any kind of money or the power or misuse by anybody. So please, again I would request that agar nagrik vigilant hai, so vigilant nagrik, C is the citizen become vigilant, and it is your election. If you would help us, we will guarantee that in 100 minutes you get a written response on the same mobile number from which you make a complaint. Similarly, PWD app also gives the opportunity to the PWD voters to go there and even register for facilities or facilitation at the booth. उनको कुर्सी चाहिए, उनको कोई मदद चाहिए, वो वॉलंटियर तो मिलेगा ही, वो सब इस पर पहले से बुक कर सकते हैं. Another interesting and very critical application is KYC, Know Your Candidate. तो कैंडिडेट का पूरा एफिडेविट which will give all his assets and liabilities and all the criminal background, if any, would be made available to the voters. Through this app of Know Your Candidate, अगर किसी भी कैंडिडेट की कोई भी राजनीतिक कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि है तो वो इस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, क्या अपराध है उनके ऊपर में, किस तरीके की एफआईआर है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, केस की क्या स्टेटस है. एंड इन एडिशन, एज यू ऑल नो, 3 times दे विल हैव टू पब्लिश इन द न्यूज़पेपर्स. तो कमीशन का काम है कि अगर की क्रिमिनलिटी इन द इलेक्शंस, इन द पॉलिटिक्स गेट्स एलिमिनेटेड, रिड्यूस्ड, इफ नॉट एलिमिनेटेड, उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम उसकी पृष्ठभूमि वोटर के सामने स्पष्ट दिखाई दे. Then it is voter's choice. We enable the voter to take an informed choice. It's part of the disclosure. And all the assets, liabilities would also be known in this. So your constituency, your candidate, his background, financial, criminal, if any, would all be known through the Know Your Candidate. So please use this. Not for voters, for the candidates also there is an application called Suvidha. जितनी भी एंटाइटलमेंट्स उनके हैं वो सब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. एंड वी हैव डायरेक्टेड, कमीशन इज डायरेक्टेड दैट इट विल बी सर्व्ड टू द कैंडिडेट्स ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, सो दैट देयर इज नो बायस. हुसेवर लॉक्स इन फर्स्ट, हुसेवर अप्लाइज फॉर ए ग्राउंड और फॉर एनी फैसिलिटी फर्स्ट, एंड इफ दैट इज ए लिमिटेड प्लेस स्पेस, he or she will be given the candidate first. Friends, we also had a detailed interaction with the enforcement agencies, and to just tell you that no cash would move in the poll going states between after 5 o'clock till 10 o'clock in the morning. Banks have been directed कि कोई भी कैश का मूवमेंट अपनी वैन के थ्रू नहीं करेंगे. ऐसा देखा गया है कि उसी वैन को यूज करके कुछ ना कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं कि उसमें कैश मूव हो इलीगल, उसको मना किया गया. एयरपोर्ट्स वुड बी अंडर वॉच. द जीएसटी वुड कीप ए ट्रैक ऑन ऑल द ई बिल्स टू फाइंड आउट दैट नो कंज्यूमर गुड्स, देयर इज नो स्पर्ट इन सप्लाई ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन दैट पर्टिकुलर स्टेट for distribution as a freebie or as an inducement. All the borders would be sealed in these states. There would be there would be strict watch on any kinds of money or cash or drugs or that kind of thing. Friends, during this phase in the communication age, there are a whole lot of misinformation and fake news and narratives which get generated. So through you again, we request the voters to be vigilant, to at least see that पिछले कितने इलेक्शन में सेम न्यूज उसी प्रकार से चल चुकी है. उसको कम से कम आगे बढ़ाने से पहले अपनी थोड़ी सी विजडम लगा के सोच लें कि ये सच हो सकती है कि नहीं. फेक नैरेटिव्स में आगे बढ़ाने में मदद ना करें. अगर लगता है ठीक है तो जरूर आगे बढ़ाएं, उनका हक है. बट वी हैव एस्टेब्लिश्ड सोशल मीडिया टीम्स इन द सीओ ऑफिस and all the district magistrates and SSP's offices to keep a strict watch. And if anybody tries to create rumors or create fake news or news which are objectionable, the appropriate action the teams would take as mandated
under the law. So, having given you an overview of the efforts which have gone into the entire preparation, now I would come to the main thing for which you are waiting. And to tell you first, the term of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is expiring on 8th of January 2023. And there are 68 ACs across 12 districts, and with the specific seats reserved for SCs and STs. So out of 68, 17 seats are reserved for SCs and 3 seats are reserved for STs. As you see the data on this slide, the forthcoming legislative election, our teams would be ready to serve more than 55 lakh electors, of whom about 67,000 are service voters and 56,000 in the state of Himachal would be PWDs. And you would be happy to know that there are 1,184 voters who are 100 plus. And we have reached everybody's house as a mark of respect towards them. And you will be happy to know, and it's a motivational thing for our young voters. There are voters who have voted in all elections since 1950. All, including the local body elections. And there are 1,184, and they come to, many of them come to the booth. They say we do not need the Form 12D, we'll come to the booth. So they are really the source of inspiration for all of us. And हमने उनको सबके घर में एक चिट्ठी भेज के अपने BLO साहब के थ्रू या अफसर्स के थ्रू सबको सम्मानित भी किया और आभार भी प्रकट किया कि आप ही की प्रेरणा से बाकी लोग भी आगे बढ़ के वोट दे सकें. Friends, there are 1.2 lakh voters who would be 80 plus in Himachal, and 1.86 lakh voters would be first time voters between 18 years and 19 years. And these are the ones with whom we are very, very focused way we are connecting with all of them by organizing large number of events in their colleges and institutions. As you know, the amendment in section 14 enabled us to register voters in the 4 qualifying dates. तो आप इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं कि जो लोग 1 जनवरी अगर ये अमेंडमेंट ना होता तो 1 जनवरी 22 को जो भी लोग 18 इयर्स के हो गए वही वोटर बन पाते. उसके बाद में 1 जनवरी 23 की क्वालिफाइंग डेट से वोटर बनते. बट बिकॉज ऑफ दिस चेंज in Himachal alone, those who were born after 1st January 22 but before October 22, 43,173 additional voters have been enrolled and they would be able to participate in this festival. This is only because of the amendment which happened, and you can extrapolate it and see because of these 4 changes. And now what we have done and what will happen in the SSR now, even if somebody is 17 and is going to be 18 next year till October 2023, in the new SSR which is coming in the entire country, they can apply in advance. And we take the responsibility of keeping that application with us and making him or her the voter the date on his or her birthday. And our officers will send them a kit, a welcome kit for the new voters, which will contain the epic card, which will contain how to vote, which will contain about how the EVMs function, which will contain the digital, the website links to where they can educate themselves about the election process. We call upon all voters in Himachal to come out and vote. Their participation should take inspiration from the elders who are there in that state, and our fervent appeal that all stakeholders maintain COVID appropriate behavior. Friends, आयोग ने हमेशा मीडिया को चुनावी प्रक्रिया में अपना सबसे बड़ा एलाई माना है. It's a kind of a natural ally. That is why first time we come here and announce. There is nobody who comes to know of this. मैं दोहराना चाहूंगा कि आपके माध्यम से
सभी वोटर्स को एक बार पुनः अपील करेंगे एंड द एग्जैक्ट शेड्यूल फॉर द स्टेट वुड बी as it's being shown on your slides. वो दे दो notification की dates दे दो. If it is visible, the date for the Gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October. That is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. So again, through you with the appeal to all the voters on behalf of all of us to come and vote in the state of Himachal, I hand over to Shefali ji back. Thank you. We'll take questions. नीरज, आप शुरू करें. माइक दे दें यहाँ फर्स्ट रो में. नीरज. हेलो हेलो जी सर, नीरज हूं न्यूज 18 इंडिया से, नेटवर्क 18 से. जी मेरा सवाल तो एक ही है, लेकिन उससे जुड़े कई क्लैरिफिकेशन चाहिए होंगे. क्या गुजरात, पहला तो यह कि गुजरात चुनाव की घोषणा अपने साथ में करने का फैसला क्यों लिया, साथ में न करने का फैसला क्यों लिया? इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्या गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा 8 दिसंबर के बाद होगी? क्योंकि गुजरात के विधानसभा की अवधि में वक्त अभी काफी है, क्योंकि पिछली बार 10 दिनों के फासले पे दोनों राज्यों के चुनाव की घोषणा की गई थी. और तीसरा सवाल यह है, दोनों सवालों के जवाब से वो होगा कि आप ही लोगों ने रूल बनाया है कि 6 महीने के अंतराल के अंदर में जो जिन राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे उनकी घोषणा साथ में की जाएगी. अभी साल के शुरुआत में उत्तर प्रदेश में हमने देखा था, उत्तर प्रदेश के साथ बाकी 4 राज्यों के. तो जो रूल चुनाव आयोग बनाता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन उससे आप लोग पीछे हट रहे हैं, उसी को आप लोग रूल को बदल रहे हैं. तो ऐसा क्यों है, अलग अलग क्यों है? 6 महीना के अंदर 2 राज्यों के विधानसभा की अवधि खत्म होती है और आप लोग जो हैं अलग अलग चुनाव की घोषणा कर रहे हैं. एक साथ 3-4 क्वेश्चन ले लेते हैं. जी फाइन सर. एक और ले लेते हैं. सर, मेरा नाम रवि त्रिपाठी है, मैं जी न्यूज से हूं. मेरा सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टी ये सवाल उठा रही थी कि एक राज्य का चुनाव हो जाएगा और उसके नतीजे आने के बाद दूसरे राज्य का चुनाव तुरंत होगा, तो चुनाव प्रभावित माना जाएगा कि इसके रिजल्ट की वजह से उसका, ये इस तरह के सवाल उठते रहते हैं. तो आपने इस बात का ध्यान रखा था शायद पिछली बार इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोनों के रिजल्ट 18 तारीख को किए गए थे. क्या इस बार इस बात को ध्यान में रखा गया है या नहीं आएगी? इस तरह की शिकायत आएगी तो उसका किस तरह से आप उसका मुकाबला करेंगे? प्रदीप, आप भी ले लें. सर, मेरा नाम प्रदीप है, टोटल टीवी न्यूज़ से हूँ. और सवाल यही है सर, जिस तरीके से जो सब इंतज़ार कर रहे थे, जिस तरीके से चुनावी शेड्यूल का, गुजरात भी सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला जिस पर नजरें थी, लेकिन ये जो चुनावी मुकाबला सिर्फ अनाउंस हुआ है, हिमाचल का तारीखें अनाउंस हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें गुजरात में भी आपने बैठकें की थी, गुजरात की तैयारियां, ऐसे लग रहा था कि आप अनाउंस करेंगे. इसके पीछे हटने की क्या वजह रही? क्योंकि आपने पूरा शेड्यूल वहां पर तैयार किया था, बैठकें कर ली थी, तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी थी, होल्ड रखने की वजह क्या है? सर, ऑन दिस ओनली, वन मोर. This is on election. Have anything being decided or recommended to the parties on the freebies? I'm Anuj from Republic TV. Have anything recommended to the political parties on freebies? So I will take these questions. The first from the first row and all 3 together. Is it? Ji? Both. I'll do both so that it's fair to everybody. Commission actually goes by the convention in announcing the schedule of elections. It has decided to go by the convention which was set up, which was last followed. In any case, the preparation and conduct of elections
is a very detailed exercise, and it takes into account various factors, variable factors, consultation with all the stakeholders, and the factors which are competitive. As the friend asked, the impact of result of one election on the another, the gap between the two elections. As Mr. Neeraj asked, that we have all in the recent past announced together. So you may know that when the elections were announced together in the round in 5 states, West Bengal, Pondicherry, Tamil Nadu, Kerala and Assam, there was a gap of 10 to 15 days. In these elections, there is a gap of 40 days in the qualifying date. There are factors like the weather. In case of Himachal Pradesh, the weather is a very important factor, especially in the upper reaches, in the constituencies where snowing takes place. So, having seen everything together, including the MCC period which extends, including the preponing in certain states when there is a gap of more than closer to 2 months, less than 2 months, there are multiple factors. And after examining everything, Commission decided, weighed everything and decided to go by the convention which was last held. Further, MCC period which gets extended has been reduced, if you would see the details, from 70 days to 57 days, which is a reduction of 13 days. This is first. And also, if you see it against the 2012 elections announcement when it was combined, there is a reduction from 81 days in the entire period to 57 days, which is 30% less. So now we do not want that the entire election exercise continues for a very long period. It does not disturb anybody. And because of the variety of factors, multiple things together, Commission decided to go by the convention which was set up last time. No, let's ask somebody else. When we come for Gujarat, we'll tell you this. We go to the last. Can you just clarify what you just said? 40 days gap. I'll explain it again. The MCC period, which was last time in the 2 states, is getting reduced in Himachal from 70 days to 57 days. Many in Himachal Pradesh had to wait for a long time for the declaration of results after the polling. That period is also substantially reduced. So, while we followed the convention, we further refined it, so that the MCC is not unduly extended. Voting takes place before the onset of the snow. Festival season is over by now, because this, you know, in Himachal the Shara and all is so much festive mahal. So everything put together, going by the convention and further refining. And we'll come for the next stage. I just hope I'm not misquoting you. from Informist Media. Sir, this is Shahid Abbas from Informist Media. But yes, sir, 1 sec. Let me finish. काउंटिंग में हम बिना ठंड के करा लेंगे, आप चिंता न करें। सर, दिस इज प्रेस नोट के डिटेल्स हैं। प्रेस नोट मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ऑल डिटेल्स आर देयर। इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन देन वी टेक, अदरवाइज वी लाइक टू वाइंड अप। This is Shahid Abbas from the Informist Media. In the past, it has been seen in previous elections that there were many leaders, especially the heavyweight leaders, have made statements or announcements which were violative of the poll code. And the poll panel has let them off with a minor or a small warning. Now this time, should we expect that the poll panel will gather enough guts to take stern action? Please be sure of it. Please be sure of it. 2 things. 1 minute, let me answer it. Because he's asked a important question. And this is also linked to the, somebody asked about the freebies distribution during the election. Let us assure you on behalf of all of us who are sitting here,
we have zero tolerance towards the distribution of any kind of inducement, and we have energized entire machinery. I'll explain to you what we have done and what we will continue to do. GST will look at all the e-ways and goods which are going to the poll-bound states, even the nearby states. They have mapped all the godowns, warehouses, so that nothing is stacked there. Saris or mixies or these kind of things. All. Airports will keep a strict watch, including the private air strips, through air control, so that no irregular, illegal, unscheduled flight goes unchecked. The borders of the state, in this case, which is Himachal Pradesh, is bordering with Punjab, with J&K, borders would be sealed. Anything coming inside, we have zero tolerance. The deputy commissioners, IGs, police personnel, excise personnel, chief secretary, DG, all understand this very well. And if there is any deficiency in this understanding, we'll make sure that they understand. It will not happen. Let CC kindly complete, please don't interrupt. We have recently seen a debate that the political party is making announcement from the dais and from the platform. What about that? Like, is anything being taken by the Election Commission on that also? There is as you all know, there is a consultative process which we have initiated. That is about manifestos. That does not use the term which you are using. In the manifesto, anything which is an election promise, that should be explained, that should be feasible. The political parties, candidates have an undisputed right to announce and make a promise which they feel is feasible. Simultaneously, just oppose this, voters also have a right to know how would it be fulfilled. So this consultative process, it would all be governed by the existing extant legislative framework. And you know what the legislative framework is. Beyond that, the consultation is going on. The honorable political parties are supposed to come back to us on a consultation paper by 19th of October. Let us receive those valuable suggestions. Because they are the major stakeholders in the entire process. They intermediate between the voter and the government. So we value we'll give the due consideration, rather what it deserves, and thereafter would decide as to what needs to be done. So we'll take the last question from there. Hi sir, so my question is regarding the fact that you said that you're going to set up social media cells in all DM offices. Can you please introduce yourself along with... Deeksha Bhardwaj from Hindustan Times, in the CEO office as well as in the DM office. But are you planning to take any action? Will there be punishment for misinformation? Because a lot of it has gone unchecked so far and there's only a voluntary code of ethics. Are you going to punish the people for spreading this misinformation, or is it going to be another just like a, rap on the wrist? It's an extremely important question, and it requires an answer which is very vast in itself. There are multiple things which can happen while we are looking at the social media. There can be existing narratives which exist from the last election, previous election, 3-4 election. जैसे हर बार एक न्यूज आती है कि एक पुराने सीईसी साहब ने कहा कि कृष्णमूर्ति साहब ने कि वो ईवीएम से इलेक्शन रिग हो जाते, वो न्यूज़पेपर में ही नहीं आया कभी, वो किसी ने प्रिंट किया ऐसा जैसे न्यूज़पेपर जैसे लगे, हर बार डाल देते हैं. So this is one part. We will use whatever methods we have to identify such fake news which keep coming all the time. Second, there are certain rumors which gets spread during the elections in a particular constituency or which have ramifications across. आप देखिए पूरा चुनाव आयोग कितनी मेहनत करके एक पूरे इलेक्शन को 5-5, 6-6 इलेक्शन को एक साथ में कराता है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर न्यूज से वो होने लगता है कि एज इफ all kinds of narratives come. Social media would be monitored. They have been all directed to
respond immediately before it gets the traction. It becomes explosive. If it's 30 minutes gone, then there is no point answering this because the damage is done. So they have all been asked to be very, very vigilant, respond with facts, and if they can't find facts in 15-20 minutes, reply by saying that we have seen this and we are conducting, we are finding facts and we will come back. So that they join that thing immediately, they break that cycle, we understand how it moves by getting it out of our hands. Sir, Anand, one minute, let me complete the other dimensions also. There are criminal action possibilities which originate out of various legislative framework under the IPC, under the various other acts. We will not hesitate in taking those actions wherever IPC or other sections violation is involved. We have made it very clear to everybody and will enforce this. Sir, thank you so much, sir. मैम, सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, अरविंद पांडे बहुत क्वेश्चंस होंगे, डिटेल प्रेस नोट आपके साथ है, कृपया आज की रिपोर्टिंग उसी पे कर लें हम. थैंक यू सो मच. तो आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे विज्ञान भवन से, जहां निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है. 12 नवंबर को होगा मतदान और 8 दिसंबर को होगी काउंटिंग, यानी मतों की गिनती जो 8 दिसंबर को होगी. ये 2 तारीखें जो सबसे महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश को लेकर, और कुछ बड़े बिंदु जो सामने रखे गए हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. उन्होंने साथ ही साथ इस बात को भी सामने रखा कि किस तरीके से बड़े स्तर पर चुनाव आयोग के द्वारा कदम उठाए गए हैं, और ये कदम इस तरह उठाए गए हैं कि जहां एक ओर कोई भी वोटर छूटे ना, इस चुनावी प्रक्रिया में जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनमें से कोई भी वोटर ना छूटे, इसको लेकर, इलेक्टोरल रोल को बनाने को लेकर, पोलिंग स्टेशंस निर्धारित करने को लेकर, तमाम एप्स की सुविधा मतदाताओं तक पहुंचाने को लेकर क्या कुछ कदम निर्वाचन आयोग के द्वारा उठाए गए हैं, उन सबको विस्तार से निर्वाचन आयोग ने आज सामने रखा, जिसमें तारीखों के ऐलान के साथ ये बात भी कही गई कि हिमाचल प्रदेश में एक ही चरण में होगा मतदान, और ये मतदान 12 नवंबर को होगा. साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे जो मतदाता है उसको भी जागरूक होना होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की ओर से वोटर हेल्पलाइन, सी विजिल, केवाईसी जैसे एप्स तो उपलब्ध कराए ही गए हैं, लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक दलों और तमाम उन लोगों के लिए भी एक तरीके की को सावधान रहने की भी एक चेतावनी चुनाव आयोग की ओर से कि जो फेक नैरेटिव्स, जो झूठी खबरें, जो गलत खबरें चुनाव के दौरान, खास तौर पर जब चुनाव प्रचार होता है उसके दौरान सामने आती हैं सोशल मीडिया पर, खास तौर पर उस पर लगाम कसने के लिए भी निर्वाचन आयोग ने बड़े कदम उठाए हैं. और यहां तक कहा गया है कि अगर आईपीसी की कोई धारा के अंतर्गत जो भी कदम, जो कोई फेक नैरेटिव या कोई ऐसा क्रिमिनल न्यूज सामने आती है जो आईपीसी की धारा के अंतर्गत आती है, तो उसको लेकर भी कड़ा कदम उठाया जा सकता है. हमारे संवाददाता ऋषि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं. ऋषि, हालांकि हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों की तिथियों के ऐलान की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन जैसा पिछली बार हुआ वैसा ही इस बार भी पहले हिमाचल प्रदेश की तारीखें सामने आई हैं. चुनाव आयोग ने हिमाचल की है, और हम सब जानते हैं ऋषि, आप अब ये जो जी बोलिए, मुझे लगा जिस तरीके से 12 नवंबर को चुनाव होने हैं हिमाचल में, लेकिन एक बात और सुनिश्चित की गई है कि 8 दिसंबर को जब ये मतगणना होगी उससे पहले गुजरात विधानसभा के चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे, जैसे कि पिछली बार भी यही हुआ था. चुनाव आयोग ने साफ कहा कि हमने जो अलग अलग राज्यों से, दोनों राज्यों से जो राजनीतिक दलों के साथ मंत्रणा और जो वहां की जो मौसम से संबंधित परिस्थितियां और जो जनता की जो जिसके साथ जो मंत्रणा हुई है, उसके आधार पर पहले भी इस तरीके के फैसले लिए गए थे. पिछली बार भी ऐसा हुआ था. इसलिए उन्होंने कहा कि हमने पिछले बार के कन्वेंशन को फॉलो करते हुए इस बार ये फैसला किया है पहले की तरह कि इस बार हिमाचल के चुनाव पहले कराए जाएंगे,
और उसके बाद गुजरात विधानसभा के चुनाव होंगे। लेकिन दोनों ही विधानसभाओं के जो चुनाव परिणाम होंगे वो एक साथ संभवतः कराए जाएंगे। और इसको उन्होंने कहा कि 8 नवंबर से जो 8 दिसंबर तक का जो समय है, इसमें जो ईवीएम मशीन्स हैं जहां जिनमें वोटिंग हो जाएगी, उसको इस बात के लिए सुरक्षित और रखा जाएगा। और उन्होंने एक सवाल के जवाब में कि क्या उस समय मौसम उस तरीके का, उन्होंने कहा कि आयोग मतगणना को लेकर, मौसम को लेकर चिंतित नहीं है। उसकी चिंताएं उन लोगों को लेकर हैं जो वोट डालते हैं और बूथ तक पहुंचते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मतगणना को लेकर किसी भी तरीके की कोई चिंता नहीं है। जी ऋषि, तो अब चूंकि तारीखों का ऐलान, हिमाचल प्रदेश की तारीख का ऐलान हो गया है, तो अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो गया माना जाना चाहिए? बिल्कुल, ये नियम है कि जैसे ही चुनाव आयोग किसी भी राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है या देश में लोकसभा चुनाव का जो ऐलान करता है, उसी दिन से और उसी वक्त से उस राज्य में तो जहां पर चुनाव होने हैं और उस जगह पर जहां चुनाव होने हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। और अब ये तय है, ये सुनिश्चित है कि जो हिमाचल में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है और वहां पर सभी जो नियम है जिनका जो पालन है वो चुनाव आयोग के अनुसार, चूंकि आयोग के पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की सिचुएशन में अधिकार होते हैं कि वहां पर जो परिस्थितियां हैं, जो वहां का जो पूरी प्रक्रियाएं हैं, जो वहां पर जो कार्यवाही है, जो चुनाव प्रचार है और जो सरकारी मशीनरी का कामकाज है, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार ही होगा। इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर दिया गया। जी ऋषि, इस बार हालांकि चुनाव आयोग हमेशा पर्दे के पीछे बहुत सारे ऐसे काम करता है जिससे ये संभव हो सके, जो चुनावी प्रक्रिया है वो सही ढंग से, सुचारू रूप से सफल हो सके। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि वादों की जो झड़ी लगती है पार्टियों की ओर से, उसको लेकर स्पष्ट भी किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि कंसल्टेटिव प्रोसेस इस वक्त जारी है, वो शुरू हो चुकी है। लेकिन जो बात कही गई है कि जो मुफ्त चीजें बांटी जाती हैं उनको लेकर भी बहुत व्यापक स्तर पर कदम उठाए हैं चुनाव आयोग ने कि उन पर भी लगाम कसी जा सके। देखिए ममता, यहाँ पर दो प्रश्न एक साथ आए जिसका चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्टता से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरीके की फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन पर चुनाव आयोग जीरो टॉलरेंस है और संबंधित पक्ष को लेकर जो भी कार्यवाही है वो उसमें तुरंत की जाती रही है और आगे भी की जाती रहेगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हर एक राजनीतिक दल का ये अधिकार है कि वो अपने मैनिफेस्टो में कुछ भी वायदा करे, लेकिन इस वायदे को वो कैसे पूरा करेगा, इस बात को जानने का अधिकार जनता का है। और उन्होंने कहा कि आयोग इसमें एक फैसिलिटेटर का काम करता है। ऐसे में हमने ये कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू की है राजनीतिक दलों के साथ कि वो इस मामले में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें अपनी राय दें। और हर एक राजनीतिक दल की ओर से उन्होंने कहा कि इस मामले में राय उनको प्राप्त धीरे धीरे हो रही है और इसमें जब राजनीतिक दल इसमें कोई अपने एक राय बन जाएगी तब उस पर कोई फैसला होगा। यानी कि जो फ्रीबीज, जो मैनिफेस्टो में जिसका ऐलान किया जाता है, उसको लेकर उन्होंने साफ कह दिया कि यह एक कंसल्टेटिव प्रोसेस का हिस्सा है और सभी राजनीतिक दल और जनता की जो उसका अधिकार है जानने का कि ये कोई भी जो पक्ष है जिसको वो पूरा करने वाले हैं राजनीतिक दल, उसको कैसे करेंगे। लेकिन इतना सुनिश्चित उन्होंने कर दिया कि फ्रीबीज के डिस्ट्रीब्यूशन को जो अनफेयर मीन्स का जो प्रयोग है चुनाव के दौरान, उसको लेकर आयोग की जीरो टॉलरेंस है, किसी भी हालत में इसको वो बर्दाश्त नहीं करेगा। जी ऋषि, अब चूंकि तारीखों का ऐलान हो गया है तो जाहिर है कि अब आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। जब चुनाव प्रचार होता है तो तमाम बातें भी सामने आती हैं और जब नेतागण भाषण देते हैं तो सोशल मीडिया उन भाषण में से चीजों को उठाकर उन्हें अलग रूप में सामने रखकर कुछ फेक नैरेटिव्स भी तैयार करता है। हमने हर चुनाव में पीछे भी देखा है। क्या ये भी संकेत स्पष्ट मिलता है चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि इस बार इसको लेकर चुनाव आयोग भी टॉलरेंट नहीं रहेगा, यानी अगर कुछ गलत कहा या किया जाएगा सोशल मीडिया पर या भाषण में तो कदम उठाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए ममता, इस मामले में आयोग पहले से ही इस बात को सुनिश्चित कर चुका है और आयोग हर चुनाव में इस बात को सुनिश्चित करता भी है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चुनाव के दौरान जो पोस्ट किए जाते हैं उस पर उसकी मॉनिटरिंग किस तरीके की हो। इस मामले में उसने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ उसका MOU भी साइन है और इस बात को वो सुनिश्चित करता है कि चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो या किसी भी इंस्टाग्राम हो, किसी के ऊपर भी अगर कोई फेक न्यूज या नैरेटिव पोस्ट किया जाता है तो आयोग तुरंत संज्ञान लेता है और
वहां पर उसको तुरंत हटाया जाता है। इसके अलावा जहां से ये फेक नैरेटिव एस्टैब्लिश किया जाता है उसको लेकर भी आयोग कार्रवाई को लेकर स्पष्ट होता है, और इस मामले में हमने देखा है कि कार्रवाई पहले भी की गई है। इस बात को और उन्होंने इस बार रेखांकित किया कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि फेक नैरेटिव, फेक न्यूज को सोशल मीडिया के जरिए एक राय शुमारी, एक राय बनाने में प्रयोग किया जाता है, इस पर उन्होंने कहा कि जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रयोग और ज्यादा बढ़ रहा है वैसे वैसे इन सब चीजों को कंट्रोल करना उनके लिए चुनौती है, लेकिन आयोग लगातार इस काम को बखूबी कर रहा है और आगे करता रहेगा। जी ऋषि, हमने देखा है कि कैसे चुनाव दर चुनाव चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए जो सुविधाएं देते रहे हैं पोलिंग बूथ पर, या पूरी प्रक्रिया को सुविधा इस तरीके से कि चाहे ऐप्स के माध्यम से ही जानकारी मतदाता तक पहुंचती रहे। लेकिन इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये संकेत भी सामने स्पष्ट था कि दिव्यांगजन की बात करें, ट्रांसजेंडर्स की बात करें, या वृद्धजन की बात करें, या नए वोटर्स की बात करें, इन सबको रजिस्टर्ड वोटर के तौर पर सामने लाना, इसको लेकर भी खास प्रयास किए गए हैं। इसको देखिए ममता, जिस तरीके से सभी मतदान केंद्र होंगे सुगम, सहज और सुरक्षित, इस आधार पर जो चुनाव आयोग का स्लोगन है, जिसमें उसने ये सुनिश्चित किया है कि सभी मतदान स्थलों पर जो ग्राउंड फ्लोर पर एक तो होंगे, दूसरा रैंप बनाए जाएंगे और प्रॉपर ग्रेडिंग की जाएगी। की फैसिलिटी और इसके अलावा जो तमाम ऐसे रोशनी के इंतजाम के, किसी भी पोलिंग बूथ पर कहीं भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, एक तो इस बात को उन्होंने सुनिश्चित किया। दूसरा, आपने कहा कि मतदाताओं की उन्होंने जिस तरीके से संख्या बढ़ाने को लेकर और जो उन्होंने प्रयास किए हैं कि जैसे सभी मतदाताओं को, खासतौर से जो PWD यानी कि जो दिव्यांगजन है उनके लिए और जो नए मतदाता हैं, इसको लेकर आयोग ने एक आंकड़ा यहाँ पर रखा कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार इस बार 18 से 19 वर्ष के 1,86,681 मतदाता जुड़े हैं, और ये उन्होंने कहा कि एक बड़ा अचीवमेंट है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 80 वर्ष से अधिक के भी जो मतदाताओं की जो संख्या है वो आइडेंटिफाइड है, और उसमें उन्होंने बताया कि 1,22,000 करीब 87 के करीब जो है इसमें मतदाता हैं, और सर्विस इलेक्टर की भी उन्होंने संख्या बताई, PWD इलेक्टर्स की संख्या बताई, और मेल फीमेल की जो संख्या है उसको भी उन्होंने रेखांकित किया। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि आयोग का जो मूल मंत्र है कि कोई भी मतदाता ना छूटे, इसको लेकर आयोग की जो पहल है स्वीप के माध्यम से, और जो उनकी तमाम एजेंसीज हैं इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि पहले तो हर मतदाता को वोटर लिस्ट में लाया जाए, और उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाए कि वो मतदान बूथ तक पहुंचे, और अगर वो मतदान बूथ तक नहीं पहुंचने में संभव है तो जो नियम है, चाहे वो 80 वर्ष से अधिक के या PWD को लेकर, तो ऋषि ये भी बात कही गई है कि अगर वो नहीं आएंगे तो चुनाव आयोग उनके द्वार तक पहुंचेगा कि उनका मत जरूर लिया जा सके। और शहरी उदासीनता, शहरी लोगों में उदासीनता जो वोटर को लेकर है उसको भी, यानी तमाम पहलू हैं मतदान से जुड़े हुए जिनको बहुत गंभीरता से, जिन पर ध्यान भी दिया जा रहा है, उनको लेकर कदम भी उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि 12 नवंबर को मतदान होना है, 8 दिसंबर को मतगणना होनी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, कुछ ही क्षणों बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर समाचार।